हमारे हैं 2 महीने के करेंगे, जुलाई और जून का। ठीक है, मेजर नेशनल इवेंट जुलाई 2025। द नेशनल लेवल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन केवड़िया गुजरात। मतलब वाइस चांसलर जो होते हैं पीसीज, उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग है उसको केवड़िया गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया है। द इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस was organized by Ministry of Port, Shipping and Waterway at India House, London to promote marine cooperation। मतलब इंडियन मरीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस लंदन में ऑर्गेनाइज करी गई है। इन अंडर ऑपरेशन मैडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज बस्टेड इंटरनेशनल ड्रग syndicate operating across 4 continents, more than 10 countries में 4 continents में एक ड्रग सिंडिकेट चल रहा था। उसको नारकोटिक ब्यूरो ने उसको पैसे बस्टेड है, ठीक है, बस्ट किया। नीति आयोग इन कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स 2023-24। ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम सिक्किम त्रिपुरा कैटेगराइज एज फ्रंट रनर। और सब इसको एमएसटी कर लो। मिजोरम मिजोरम सिक्किम एंड त्रिपुरा, इनको फ्रंट रनर कहा। और है तुम्हारा हनाथियाल मिजोरम इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है? हनाथियाल। कहाँ की है? मिजोरम की। हिना जैसा नाम है कुछ, हनाथियाल मिजोरम इमर्ज एज बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। फिर है तुम्हारा लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश एज लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट। क्या? लॉन्गडिंग। हिनाथियाल ध्यान रखना है अपन को, लॉन्गडिंग ध्यान रखना है, और ये एमएसटी तुम्हारी फ्रंट रनर में। अब आते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ पेशवा बाजीराव वन एट नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस इन पुणे। यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone of India's first national level cooperative यूनिवर्सिटी। इसका यूनिवर्सिटी त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन आनंद गुजरात। क्या नाम है? त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन आनंद गुजरात। ही कौन सी है? कॉर्पोरेटिव यूनिवर्सिटी है। नाम क्या है? त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन लंदन इन आनंद गुजरात। It aims to promote cooperative education, innovation and employment. 6-year-old, अगला है 6-year-old तेगवीर सिंह of Punjab has become the youngest person to climb Mount Elbrus, highest peak of Europe। तो क्या नाम है? तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह, ये क्या, कहाँ? एल्ब्रूस। एल्ब्रूस को इन्होंने फतेह करा है। 4 जुलाई 2025 कोल एंड माइन मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी लॉन्च कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिक्लेम। रिक्लेम क्या है? कोल मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इट एम टू प्रमोट इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इन माइनिंग डिपेंडेंट एरियाज। रिक्लेम स्टैंड फॉर रीच आउट, एनविजन, को डिजाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। रिक्लेम याद रख लो। रीच आउट, एनविजन, को डिजाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। इन जुलाई 2025 द इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड launched by Union Minister of Jal Shakti. It is a web-based platform to provide flood mapping and flood forecasting। क्या करना है? फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फोरकास्टिंग। ठीक है, सी फ्लड इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर
will organized first global manuscript heritage conference on manuscript heritage at भारत मनोरम न्यू दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है तो ये न्यू दिल्ली में हुई है, ये ध्यान रखना। हम आते हैं इस पेज पे। नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2025। इट एम टू प्रमोट ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट थ्रू स्पोर्ट। मतलब अपने पास एक न्यू नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 आई है। इन जुलाई 2025 द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम RDI has been approved by research development and innovation scheme have been approved by union cabinet with corpus of rupees 1 lakh crore। कितना? 1 lakh crore to strengthen the research and innovation ecosystem. It aims to provide long-term funding at a low or zero interest, at low and zero interest rate to encourage private sector investment in RDI. Private sector investment in RDI. SIPRI, SPREE, SIPRI 2025 scheme approved during 196th meeting of Employees State Insurance Corporation। SIPRI क्या कर SPREE Employees State Insurance Corporation। This scheme will be implemented from 1 July to 31st December 2025। Its objective is to bring contracts, informal and deprived worker under the ambit of social security and health benefit। देखो its objective is to bring contract, informal और deprived worker under the ambit of social security and health benefits। मतलब सिपरी का जो सिपरी है, सपरी बोल दो, ये क्या करेगी, जो लोग कवर नहीं है उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिलाएगी। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एम्प्लॉइज लिंक्ड इंसेंटिव। क्या? एम्प्लॉइज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। It has a budget of 99,446 crore rupees। The objective of scheme is to generate over 3.5 crore job across the country within 2 years। क्या नाम है? Employment linked incentives। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। 3.5 करोड़ जॉब निकालेंगे। Maharashtra government officially declared the public Ganesh Utsav as a state festival। The tradition of public Ganesh Utsav was started by Lokman Tilak in 1893। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला inaugurated the first ever national level 2-day conference of chairperson of urban local bodies from state and union territories। The event held at International Center for Automotive Technology in मनेसर, हरियाणा। मतलब जो लोकल बॉडीज होते हैं ना, उनके चेयरमैन की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली बार हुई है। कहाँ हुई है? मनेसर, हरियाणा में हुई है। During 47th session of World Heritage Committee held in Paris, the Maratha military landscape of India has been inscribed as 44th World Heritage Site of country on 11 July 2025। A total of 12 Maratha military landscape have been included in this heritage list। Of these, 11 are Salhar, Sibneri, लोहाघाट, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पनहाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग are located in Maharashtra, while Jingi Fort is situated in Tamil Nadu। On July 16, 2025, हरेला फेस्टिवल in Uttarakhand by planting 5 lakh saplings। Arthunkalp police station located in Alpuja, Kerala has become the first police station in the country to receive
iOS certification from Bureau of Indian Standards. अच्छा, अब इसमें आते हैं. Under PM E-Drive scheme, the government of India has launched its first electric truck e-truck incentive scheme. Under this scheme, financial assistance of rupees 9.6 lakh per vehicle will be provided. हमारे चल रहे PM E-Drive. ये किससे रिलेटेड है? ई व्हीकल से. On 7 July 2025, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan inaugurated 11th India Maize Summit in New Delhi. The event was organized by FICCI in collaboration with Indian Institutes of Maize Research. Bihar government approved a proposal to provide 35% reservation to government reservation in government job, especially for women who is native residents of Bihar. India's first wooden Gurudwara has been inaugurated in Fazilka, Punjab. First, first Astro Tourism Festival in United Territory of Ladakh was organized in Leh, aiming to promote science-based tourism. First, first Astro Tourism Festival. First Astro Tourism Festival in United in UT of Ladakh was organized in Leh, aiming to promote science-based tourism. ठीक है. Prajakta Kohli has been included in Time 100 creator list of 2025, becoming the first Indian to be featured. She is known in digital world as mostly sane. Union Minister Sri Dharmendra Pradhan and Sri Jayant Chaudhary inaugurated an Agri-Tech Innovation Hub at Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology in Meerut, उत्तर प्रदेश. ठीक है. एग्रीटेक इनोवेशन हब ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है. हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च आधार बेस्ड फेस रिकॉग्निशन फेस उथ इसका नाम है फेस ओथ आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पीडीएस. हिमाचल प्रदेश. ठीक है. The Ministry of External Affairs and Department of Atomic Energy jointly organized the BIMSTEC Cancer Capacity Building Program for BIMSTEC countries. क्या? BIMSTEC Cancer Capacity Building Program for BIMSTEC countries. The first phase of BIMSTEC Cancer Care Capacity Building Program was launched on 7 July 2025 at Tata Memorial Center, Mumbai. ठीक है. India's first quantum computing valley will be launched in Amravati, Andhra Pradesh by January 2026. This quantum valley is expected to create employment for millions of professionals through research and innovation. The central government has approved the central government has approved the establishment of first small modular reactor based nuclear power plant in Bihar. Central government ने किया first small modular reactor SMR based nuclear power plant in Bihar. Under the nuclear energy mission, the government will set up SMR in six states across the country. Adani Group has launched India's first off-grid green hydrogen plant in Kutch. Off-grid green hydrogen plant in Kutch, Gujarat, with a capacity of 5 megawatt. It marks a significant milestone in renewable energy sector. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the headquarters of National Turmeric Board in Nizamabad, Telangana. टर्मेरिक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है निजामाबाद तेलंगाना में इस्टेब्लिश हुआ. ऑन 25 जून 2025 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड विद्या शक्ति इनिशिएटिव. क्या? विद्या शक्ति इनिशिएटिव इन education sector. The initiative will focus on improving the performance of slow learner in government school. ये आंध्र प्रदेश में हुआ है. विद्या शक्ति इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. ठीक है.
The Salkhan Fossil Fuel Park in Sonbhadra district, Uttar Pradesh, added to UNESCO tentative list of World Heritage Site. Salkhan Fossil Park in Sonbhadra district. Located in Kemur mountain range, the park covered 25 hectares and featured 1.4 billion people, billion year old layered sedimentary structure. ठीक है. On 29 June, on occasion of National Statistical Day, the Ministry of Statistics and Program Implementation launched Government of India Stats app. Government of India Stats app. This app will provide citizens with a real-time and easy access government statistics anytime, anywhere. Ministry of Tribal Affairs has launched Adi Karma Yogi program to improve the implementation of tribal schemes. Under this program, officers will be trained and motivated for better implementation of tribal welfare schemes. Ministry of Electronics and Information Technology organized a two-day artificial intelligence-based training program for government officials at IIT Delhi. Its objective is to provide essential AI knowledge to central and state government officials and to emphasize its practical application. Maharashtra government has recently approved the 802-kilometer long Shaktipeeth Expressway project. This expressway will connect Nagpur and Maharashtra to Goa. Nagpur in Maharashtra to Goa. On 31st May 2025, 300th birth anniversary of Lok Mata Devi Ahilyabai Holkar has been celebrated. On this occasion, Prime Minister Narendra Modi released 300 commemorative rupees 300 का commemorative coin and a postage stamp in her honor, achieving a historic milestone under उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम गोवा. उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम गोवा declared itself a fully literate state. उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम गोवा. This scheme implemented by central government for period of 2022 से 27 aim to provide education to individual aged 15 year and above who could not attend school. The government of India announced that central government employee retiring on or before 31st March 2025 with at least 10 years of service will be eligible for UPS. ठीक है. अच्छा. अच्छा. अब आते हैं फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल तिरंगा रैली. Fit India Sunday on Cycle Tiringa Rally was organized at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi. ठीक है. Fit India Sunday on Cycle Tiringa Rally. Over 15,000 cyclists participated in the rally, which was dedicated to Indian Army and brave soldiers of Operation Sindoor. ठीक है. Fit India Sunday on Cycle Tiringa Rally. Chief Justice of Delhi High Court Devendra Kumar Upadhyay inaugurated 34 digital courts at Ross Avenue Court Complex for hearing cases under Negotiable Instruments Act. 34 digital courts at Ross Avenue Court Complex. Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated Bharat GPT. Yeah, Bharat Gen, India's first indigenous developed AI-based multimodal large language model for Indian language. It is designed to support 22 Indian languages and aim to promote artificial intelligence and innovation while
while embracing India's linguistic and cultural diversity. ठीक है. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Unit 1 of Ghatampur Thermal Power Plant in Kanpur, Uttar Pradesh. It has a production capacity of 660 megawatt and mark a significant achievement in India's energy sector. ठीक है. घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 1 इनॉग्रेट हो गई है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली announced the census 2027, which will be conducted in two phases and will also include caste based data. फर्स्ट अच्छा टू फेजेस में, थ्री फेजेस में नहीं है, ध्यान रखो. फर्स्ट फेज होगा 1 अक्टूबर से 2026 से, सेकंड होगा 1 मार्च 2027 से. ठीक है, तो टू फेजेस में है. द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च सेकंड फेज ऑफ नक्शा प्रोग्राम on 2nd June 2025. Under this phase, officials will be trained in advanced geospatial technology at five center of excellence across the country. India's first AI special economic zone (AI Special Economic Zone) has been announced in Nava Raipur, Chhattisgarh, for development of technology sector. This will promote research in artificial intelligence and strengthen India's position as global technological hub. From 1 June 2025, the Government of India launched an experimental learning program for youth at Jan Aushadhi Kendra सेवा से अंडर सेवा से सीखन लर्न फ्रॉम सर्विस कैंपेन. सेवा से सीखन लर्न फ्रॉम सेवा से सीखन learn from service campaign. This initiative is jointly organized by Ministry of Youth Affairs and Sport and Ministry of Chemicals and Fertilizer. It is a 15-day program aimed at providing practical knowledge to youth in healthcare sector so that they can effectively operate Jan Aushadhi Kendra. The Asian Development Bank, with the withdrawal of a loan of USD 434.25 million from proposed 500 megawatt solar power project in Karbi Angola, Assam. In Karbi Anglong, Assam, following opposition from local tribal communities. Uttar Pradesh government approved 20% reservation for ex-Agniveer in police recruitment. Under this, Agniveer who complete 4 years of service under Agnipath scheme will get employment opportunity for their services. Uttar Pradesh government approved 20% reservation for ex-Agniveer in police recruitment. Under this, Agniveer who complete 4 years of service under Agnipath will get employment opportunity after the service. ठीक है, उत्तर प्रदेश ने एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन करा है. ठीक है, पुलिस रिक्रूटमेंट में. On 1st or 2nd June 2025, the third Lavender Festival was organized in Bhaderwa, J&K. It was inaugurated by Union Minister Dr. Jitendra Singh. The objective was to highlight the importance of lavender in Indian economy. Government of Assam and Meghalaya has agreed to jointly launch 55 megawatt Kulsi hydropower irrigation project in Kulsi River, a tributary of Brahmaputra. Both states also decided to work together to address problem of urban flooding in Guwahati city. Inspired by city of Kitakyushu in Japan, the Telangana government has announced the development of an eco town across 80 acre of Hyderabad. ठीक है, eco town बना रहे 80 acre of Hyderabad. The goal is to meet the need of future generation with a special focus on sustainable development. ठीक है, अब आते हैं
डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड ध्रुव पॉलिसी, क्या? ध्रुव पॉलिसी for creation of a geo-coded digital address infrastructure. This will simplify service in e-commerce, logistics, and governance while also promoting innovation between public and private stakeholders. Dhruv, digital hub for reference and unique virtual address. This Dhruv का मतलब है digital hub for reference and unique virtual address. अंडर प्राइम मिनिस्टर्स सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राजा राजा खास विलेज इन खारगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट सोलर विलेज। राजा खास विलेज, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। On 6th June 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated world highest railway arch bridge, the Chenab Bridge, located in Raisi district of Jammu and Kashmir. Along with this, Prime Minister Narendra Modi inaugurated developmental project worth 46,000 crore in Katra. Key project including India's first cable-stayed railway bridge, Anji Bridge, Vande Bharat train from Katna to Srinagar, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस among them, ये भी थे, ठीक है। 7 June 2025, India's first agriculture hackathon has been organized in Pune, Maharashtra. Its objective is to promote the use of modern technology to tackle challenges arising from climate change in agriculture. On 9th June 2025, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to tribal leader and freedom fighter बिरसा मुंडा। उनकी 125वीं डेथ एनिवर्सरी थी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ bulk drug pharma park in Lalitpur. The aim is to reduce India's dependence on China and make the pharma sector self-resilient. Sandeep Arya from Haryana created a world record by performing 20,000 continuous Surya Namaskar at Sun Temple, Modhera, Gujarat. His name has been mentioned into America Book, London Book of Record. Sandeep Arya. The Delhi government has announced the establishment of India's first e-waste eco park in Holambi Kalan. कहाँ? Holambi Kalan. Spread over 11.4 acre. The park will be capable of processing 51,000 ton of waste annually. Capable of processing, ठीक है। Maharashtra most ambitious roads project till date. The Samruddhi Mahamarg is now fully operational. This 701 kilometer long expressway connects Mumbai to Nagpur. The official name of this expressway is Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray Maharashtra Samruddhi Mahamarg. ओके, आज इतना ही करते हैं।